Assalamualaikum viewers, my name is Naila Tahreem and I welcome you all to Javed Publishers. I'm back again with another video. आज हम Kids English Grade 3 Chapter number 7 The Clever Fox exercise को solve करेंगे. Grammar. Transitional devices. Transitional devices are used in a sentence to connect two ideas. They are used in different situations to tell different things. Firstly, secondly, then, next, after, that, thus, therefore, lastly, finally, etc. are some examples of transitional devices. Transitional devices वो हैं जो एक sentence में use होती हैं और दो ideas को मिलाती हैं. इसमें एक sentence है, sentence में जो अगर दो बातों की दो ideas, दो different thought of school हैं और उनको मिलाने के लिए, उनको join करने के लिए जो word use होगा उसको हम transitional device कहेंगे. Remember, transitional devices are used to describe compared things and tell when, where and how something occurred. Transitional devices को हम use करते हैं चीज़ों को compare करने के लिए और बताने के लिए कि चीज़ें कब, कहाँ और कैसे हो रही हैं. For example, first I went to school, then I played at the park. पहले मैं स्कूल में गया, फिर मैं पार्क में जाकर खेला. तो यहाँ पे दो ideas की बात हुई है, लेकिन पहले सेंटेंस में हमने फर्स्ट यूज़ किया और सेकेंड सेंटेंस को उस आइडिया से मिलाने के लिए हमने देन यूज़ किया. इसी तरह encircle the correct transition word in each sentence. Because before it was raining, I got late from the school. क्या आएगा इसमें, because या before? It was raining before I got late from office. I love chocolates. Although or so, I eat chocolates whenever I can. I love chocolates, so I eat chocolates whenever I can. You need to go to bed early, although or otherwise you will be late for school. You need to go to bed early, otherwise you will be late for school. First you have to answer the question, then, although, I shall give you the sheet. First you have to answer the question, then I shall give you the sheet. The test was really hard, therefore or then only a few students passed it. The test was really hard, therefore only a few students passed it. Now moving on to the prepositions. Choose the correct preposition for given sentences. Ahmed was dash his friend when he saw it. To, with, from. Ahmed was with his friend. Get dash the car. At, with, into. Get into the car. Asma fell dash and broke her arm. Over, into, out of. Asma fell over. The dog barked dash midnight. In, with or at. So, barked at. The dog barked at midnight. You go dash the room and turn light. Out of, at or from. You go out of the room and turn right. The mother is standing dash the kitchen. In, into or at. The mother is standing into the kitchen. I borrowed a book dash them. Over, from, into. I borrowed a book from them. Now moving on to the next page, writing skills. Write a few lines about your favorite character in the story. अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी, इस चैप्टर में जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े, वुल्फ, फॉक्स और एनी अदर एनिमल, जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ लाइंस आप यहाँ पर लिखिए. Write a few lines in your notebook about any of your favorite character giving physical description. Use present tense. और इसके अलावा अगर आपका कोई भी और फेवरेट कैरेक्टर है, कोई कार्टून कैरेक्टर है, कोई और एनिमेटेड कैरेक्टर है, आपने उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी नोटबुक में, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट हाउ ही और शी और इट फिजिकली लुक्स, वो कैसे ज़ाहरी तौर पर दिख रही हैं, उनकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. नाउ एक्टिविटी डायलॉग. रीड द गिवन डायलॉग्स एंड रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स. यहाँ पे डिफरेंट डायलॉग दिए गए हैं, मतलब एक आपको कमांड मिल रही है, उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे. सिट क्वाइटली, इट इज़ अ लाइब्रेरी. देन आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो क्या आंसर करेंगे. श्योर सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. देन नेक्स्ट सिचुएशन, साइमा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कैन यू. Saima, yes of course, surely I can. जी बिल्कुल मैं ला सकती हूँ. यहाँ पे डायलॉग्स दिए गए हैं और उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे.
ये हमने बताना है। इसी तरह क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए। कोई एक बच्चा एक डायलॉग बोले और दूसरा जो है उसके रिस्पॉन्स में एक डायलॉग बोले या कमांड दे और दूसरा बच्चा उसके रिस्पॉन्स में कोई और जवाब दे, बट इट शुड बी पॉजिटिव। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।